رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of my respected audience. My name is Ram and I am working in Tariq Glass Industries since 2018. Today, I have been provided with the opportunity to present this corporate briefing session before you on behalf of management of Tariq Glass Industries Limited. Sorry. Our today's session is focused on providing important updates and insights of the company that describe about the direction and progress of the company. We are aiming to provide you a comprehensive understanding about the business of the company, so your participation in this session will be highly encouraged. Our today's presentation mainly consists of 4 phases. In first phase, we will discuss about the brief introduction of the company. In second phase, we will be discussing financial performance for the year ended 2023. Then we have a look upon future prospects of the company, and in the end, there will be a question answer session. We have some time limitation, as you know that AGM is also scheduled soon after this session. Therefore, we will request you to write down your questions that will be entertained at the end of the session. So let's start with the brief introduction of the company. Tariq Glass Industries Limited was incorporated in 1978 as a private limited company and subsequently gone transition to a public limited company. The first major milestone in the history of the company was listing on Pakistan Stock Exchange in 1944. After that, the company continued to make its steady growth over the years, and the next major milestone emerged in 2013, being the commencement of floor glass facility having production capacity of 500 metric tons per day. The next major milestone of the company came in 2021 with inauguration of another floor glass furnace having capacity of 550 metric tons per day. Now the company is currently operating 5 number of plants producing total daily output of 1,385 metric tons and offering over 1,300 products to its clientele. Another achievement attained by Tariq Glass is credit rating from PECRA, a well-respected credit rating agency in Pakistan. PECRA has assigned long-term rating of A+ and short-term rating of A1 to Tariq Glass Industries along with a stable outlook. This was a brief introduction of the company. Now we discuss about some key features that make Tariq Glass distinguishable from others. Tariq Glass Industries is one of the largest glass manufacturer in Pakistan and is leading tableware products market with the renowned brands like Renasik, Omrock, Noma, Gemware, Spinjax, and etc. Tariq Glass has also promoted the use of advanced technologies in production and is deploying state-of-the-art production machines. Round-the-clock continuous production allows TGIL not only to maintain and expand in local market but also to contribute towards much needed country exports and create additional job or employment opportunities in the country. Another huge recognition earned by Tariq Glass in previous year was inclusion in 200 Best Under a Billion by Forbes Asia. Tariq Glass is one of among the only 3 Pakistani companies who has made way to this list. Keeping in view of higher energy costs and environmental protection measures, the company is focused on use of renewable energy sources like solar power, and therefore company has initially established a 1 megawatt solar power plant and it has plans to expand it further. Along with other key features, a robust human resource and well-integrated distribution network are considered by Tariq Glass as a key driver of ongoing growth.
Now we'll take an overview of the production process. It is important to mention that glass production process, whether it is float glass or tableware, is almost same with only few variations in later stages of the production. For the sake of convenience and time saving, we are going to only discuss float glass production process today. Glass production process begins with the mixing of raw materials in a specific machine called as batch mixer. The key raw materials include soda ash, silica sand, dolomite, limestone, and some chemicals and colors. The batch is then charged into a furnace being operated at high temperatures that may range around 1500 to 1600 degrees Celsius. The batch mix is melted into a molten form here, and therefore this stage is also called as melting. After melting, the molten glass is spread over the tin baths. The molten glass floats over the surface of the tin due to lower density of the tin and takes the form of a uniform glass ribbon. It takes the form of a uniform glass ribbon. After that, the glass sheet is pulled over the annealing layer and is cooled slowly in an annealing chamber. And this stage is therefore called as annealing. The purpose of this process is to ensure that the glass sheets has no internal stresses and has no cracks in it. After annealing, the glass sheets are passed through the quality control inspection checks and cut to required sizes and shapes. And after that, these sheets are packed into wooden pallets, so these are delivered safely to customers. This was a brief overview of the production process. Now we move towards the second phase of our presentation sorry, that deals with the financial analysis for the year ended 30th June 2023. First of all, we will discuss a performance overview for the year ended 2023 as compared to the corresponding year of 2022. We can see that company earned revenue of 28.4 billion during the year as compared to 29.4 billion of previous years, with a 3% decrease. The gross profit of the company stood at 5.7 billion with a 26% decrease. The profit before tax and profit after tax decreased by 34% and 39% respectively. EPS for the year remained at 14.63 per share as compared to 24.05 of previous year. However, the retained earnings of the company increased from 8.6 billion to 10.5 billion, marking a significant increase of 22%. Long-term loans and short-term finances decreased by 32% and 52% respectively. From this financial analysis, we can analyze that company's profitability remained some under pressure during the year, but on the other hand, we can also say that the company's cash generating abilities and liquidity remained outstanding, as evident by massive decrease in company's borrowings. Now we discuss about the key factors that caused the reduced profitability, as we discussed in our previous slide. We all know that Pakistan's economy is passing through a struggling phase. Ever since I have become conscious, I have seen Pakistan economy in difficult times, and I believe we all are witnessing the same. During the year, we are discussing about the government of Pakistan struggled a lot to with the IMF bailout package, and in this process, it overburdened every sector of the country, including the industrial sector, with its so-called difficult decisions. We have highlighted here some of the government's economic and legislative measures and their impact on the cost of production and operating cost of the company. We can analyze from the table that average RLNG prices increased during the year by 31%, electricity prices by 49%, furnace oil 26%, and high-speed diesel 91%. All these form part of fuel and power costs of the company, and in a glass manufacturing industry, fuel and power costs contribute around 40 to 50% of the total production cost. We can also see that there is an increase of 36% and 28% in soda ash and silica sand prices respectively, and these are our major raw materials. The USD exchange rate has increased by 40%, causing the imported raw materials, spare parts, and machinery more expensive.
The markup rates are also increased by 40%, 7%, rendering the finances more expensive. The super tax rate has jumped from 4% to 10% and increasing the company's taxation expenses immensely. The increase in minimum wage rate has also risen payroll expenses around 25%. By analyzing this table, we can easily weigh up the rationale behind the reduced profitability for the year under discussion. Now we have some talk about the key performance indicators of Tariq Glass Industries Limited. The first KPI before us is current ratio. Current ratio basically determines the company's ability to meet its short-term commitments. And the increasing trend of the current ratio represents that Tariq Glass can easily manage its working capital and it has no issue in managing its current commitments in the near future. The next KPI is debt to equity ratio. Debt to equity ratio describes a company's financial leverage and capital structure. Companies with higher debt to equity ratio generally contain more riskier profiles. We can see from the chart that debt to equity ratio is having a decreasing trajectory, which means that Tory Glass can easily manage its long-term commitments also. The next one is return on capital employed. Return on capital employed basically indicates a company's ability that how well the company utilizes its capital structure, both loans and equity, and to earn its profits. We can see from the table that ROS in case of Tariq Glass is also maintaining a rising trend, which means that company is using its capital structure very effectively. The next one is return on assets. Return on assets describes how well the company utilizes its assets to earn the profits. We can also see from the chart that return on assets is also having a positive trend, meaning thereby that Tariq Glass is using its assets very wisely. The next is EPS. We are all well cognizant with the term of earnings per share. The Tariq Glass is also increasing its EPS every year. The next KPI before us is price to earning ratio. Price to earning ratio basically describes the market sentiments about the valuation of a share. The decreasing trend of PE ratio is because of underperformance of stock market in recent years and continuous issuance of bonus shares by the company. The next key performance indicator that we have to discuss is GP margin ratio. GP margin ratio basically indicates a company's ability to earn from its core operations and efficiencies of production and sales processes. The steady growth in GP margin ratio is also indicating that Tariq Glass is continuously improving its efficiencies in operations. The last one is inventory turnover days. It calculates how quickly a company converts its inventory to sales. We can analyze from the chart that Tariq Glass has also improved its inventory outstanding days over the years. By discussing all these key performance indicators, we can say that all the KPIs are working well and in the right direction, indicating a stable financial growth of the company. Now we assess the growth of the company over the past year, and for this purpose, we have selected some important growth factors. The first growth factor we have selected is sales. We can see that the sales of the company is continuously increasing. The positive sales growth indicates market expansion, effective marketing and sales strategies, customer satisfaction with the company's products, and more importantly, company's ability to expand further. The next one is capex. We can visualize from the chart that company is consistently incurring significant capital expenditures in the form of new building, plant and machinery, advanced technologies in order to expand its operations, and expansion is always a sign of growth. The next KPI, the next growth factor we have selected is EBITDA. EBITDA stands for earning before interest, tax, depreciation, and amortization. It reflects a company's core operational capabilities by excluding the elements that are not in the control of the company. That we can see that the EBITDA in case of Tariq Glass is increasing at a higher rate, indicating a positive growth of the company. The next one is number of employees. We can see that number of employees is also consistently increasing
indicating the positive growth of the company. Now we have a look at future prospects of the company. So first of all, we will discuss about the key competitive advantages being enjoyed by the Tariq Glass Industries Limited. Strong and sustainable cash flows, extensive experience of glass manufacturing, vast economies of scale, a well-built worldwide recognition, and a versatile product mix allows TGIL to outperform its rivals, differentiate itself in the market, and achieve a superior performance. Keeping in view of the long-term growth and sustainability of the company, Tariq Glass is working on multiple new investment avenues. One of the major investment initiatives undertaken by Tariq Glass is the formation of joint venture Lucky TG Private Limited in collaboration with LCI Pakistan Limited. This project is currently in its initial phase. Another investment Another strategic investment being explored by Tariq Glass Industries is acquisition of giant control in Balochistan Glass Limited. This project is likely to help Tariq Glass to expand more in tableware glass products market. Tariq Glass is also making investment to expand its existing operations by introducing new production lines and product ranges like ceramic dinner sets, ceramic tea mugs, and cutlery items. The company is also focused on creation of value addition in business by deploying new technologically advanced production machine, advanced IT infrastructure, operated information system, and a more reliance on of renewable energy resources. Now, our last slide showcases some of the prominent economic challenges being faced by industries in Pakistan. The top of the list is political instability. It's been now about 2 years that Pakistan is facing a severe political turmoil, and this has caused the economic environment uncertain. And therefore, it has become extremely difficult for companies to make long-term plans, and even short-term decision making is also extremely very challenging for companies. The next one is energy prices. As we earlier discussed, that the exorbitant increase in energy prices has immensely increased the cost of production and operating costs, and thereby making it difficult for companies operating in Pakistan to compete with businesses outside the Pakistan. In the next is inflation. The gigantic inflation has eroded the real income of the consumers, and consumer spendings have shrink to a larger extent, and therefore it has become very difficult for companies to maintain their sale volumes while being profitable. The next is devaluation of currency. The devaluation of PKR has significantly contributed to an already looming inflationary pressure. Although makes exports viable to some extent, but the benefit hardly covers the cost of increase of cost created by the devaluation itself. The next one is enactment of 10% super tax. The company is already paying 29% normal corporate tax, 5% workers' profit participation fund, 2% workers' welfare fund, 1% final tax on exports, and now by including 10% super tax, it accumulates about 47%. After paying around 50% of the profits in respect of legal and taxation obligations, it becomes very difficult for a company to manage funds for expansion of its operations and to pay returns to its shareholders. Although these challenges are enormous, but the company has responded well to these challenges by implementing effective counter strategies. And we are very much hopeful from Allah Almighty, who will also bless us with more success in future also, inshallah. Now I would like to end my presentation with some concluding remarks. Today we largely explored financial performance of the company, challenges being faced by us, and opportunities lying ahead. I hope that today's session was informative and brought forward valuable insights. We believe that by working together and embracing change, we can pave the way for a brighter future, and therefore we will request you for your
continued support and confidence in management of the company, who will bring you more pleasant results in future also, inshallah. Thank you once again for your time. Now I will request Vardi CFO Sam to entertain the question answer session. रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी थी। हाँ, और पूरी होगी मीटिंग अब। यार भी रिकॉर्डिंग चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस योर प्रोडक्शन प्रोसेस। सर, आप लोगों की जो फ्यूल की मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें तीन सोर्सेज हैं, दैट इज फर्नेस ऑयल, एलएनजी एंड नेचुरल गैस। तो आप बता सकते हैं आप लोगों का करंट फ्यूल मिक्स क्या है और पर टन ऑफ ईच फ्यूल आप लोगों की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? There are only two fuel sources, ji, furnace oil and RLNG. There is no natural gas. पूरे पंजाब में नेचुरल गैस किसी के पास नहीं। दो ही सोर्सेज हैं, दोनों को वैल्यूएशन होती है वीकली बेसिस के ऊपर, विच एवर इज चीपर हम उसको स्विच ओवर करते हैं जी उसको। सर, आप शेयर कर सकते हैं कि रफली यानी कितना आपका फ्यूल लगता है? मतलब अगर कॉस्ट तो उसकी चेंज हो रही होगी, जैसे फर्नेस ऑयल है इस पर 160,000 है, 140,000 कुछ देर पहले था। इट्स समवेयर अराउंड 42 to 44% ऑफ योर कॉस्ट ऑफ ऑफ द सेल्स। कॉस्ट। ठीक है सर, उसके अलावा जो आपका दूसरा बड़ा कंपोनेंट है ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। जी, तो उसके अंदर आपने प्रेजेंटेशन में भी जिक्र किया है कि सिलिका और सोडा ऐश आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ इट। आप बता सकते हैं इसके अलावा क्या है और क्या आपके रॉ मटेरियल्स का हिस्सा है, और ये कितने परसेंटेज हैं ऑफ द टोटल रॉ मटेरियल? मेजर इज सिलिका सैंड, that is around 50%, that constitutes around 50% of the batch. Okay. Around, plus minus. Then is dolomite, then is feldspar, then is aluminum hydroxide, sodium nitrate, soda ash, and few other more chemicals. सर, आप बता रहे हैं 50% सिलिका एंड देन ऑल ऑफ दीज आर लाइक 50% मिला के। ठीक है सर, तीसरा जो बड़ा कंपोनेंट so one more question regarding cost of sales, and then I'll move towards your revenue side. सर, आप बता सकते हैं ये जो तीसरा एक बड़ा कंपोनेंट है दैट इज पैकेजिंग मटेरियल, वो एक आप इंडिकेशन दे दें, इज दैट डॉलराइज्ड और रुपीस पर टन में हम उसकी क्या प्राइस दिया करें फोरकास्ट करने के लिए? ठीक है तो सर यानी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फोरकास्टिंग हम रॉ मटेरियल्स को डॉलराइज ना करें, लेकिन हम पैकेजिंग मटेरियल को करें To डॉलराइज। some extent, yes. ओके सर, टुवर्ड्स, आप कुछ कह रहे थे? जी जी, please. सो मूविंग टुवर्ड्स द रेवेन्यू साइड, जो मेरा मार्केट सर्वे है उसमें करंटली 5 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर ग्लास जो है दैट इज रफली ट्रेडिंग अराउंड 232 पर स्क्वायर फीट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप शेयर कर सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस क्वार्टर क्या रहा है और गोइंग फॉरवर्ड आप इसे कहाँ पे देख रहे हैं?
अगर आप कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो इंडस्ट्री का सेक्टर पाकिस्तान में चल रहा है, तो अगर हमारी आप ओवरऑल प्रॉफिट को भी देखेंगे तो वो उस आप नजर आ रहा होगा शेयर डाउनवर्ड ट्रेंड। इट मींस कि टोटल इंडस्ट्री को जो फैक्टर है वो पास ऑन नहीं हो रहा मार्केट के अंदर, और उन्हीं चीजों को देखते हुए जो माइक जूम से कनेक्टेड है वो इनको दे दें स्पीकर को, तो वी कैन ऑल हियर। तो उसमें मेंटेन रखना है, बट लिखने के बारे में जो भी है तो डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। सर यानी आप डिमांड साइड पे कहाँ पे देख रहे हैं ग्लास को? ग्लास की जिस तरह हमने देखा है सीमेंट की ऑफटेक में कोई 30% राइज आया है, लेकिन स्टील में ये ट्रांसलेट नहीं हुआ, तो आप ग्लास की डिमांड कहाँ पे देख रहे हैं अगले साल में, सिंस थोड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो भी चेंज हो रहा है वो? मतलब ग्लास बिल्कुल इसको लिंक कर लें फ्लोट ग्लास को स्टील और सीमेंट के साथ जी। उनकी ग्रोथ होगी तो ग्लास की भी ग्रोथ होगी, उनको डाउनवर्ड जाएंगे तो ग्लास भी डाउनवर्ड जाएगा। और Yeah, सर I'm sorry, sir. I think you have started an interview. हाँ पर दूसरों को भी मौका दें, मतलब there are so many participants. अगर वो please have a last question. चलें सर, I'll sorry for that. सर जो लास्ट मेरा असल में चलें, आप कुछ कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर टन पे बता दें, क्या चल रहा है और आप इसे गोइंग फॉरवर्ड कहाँ देख रहे हैं? देयर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो जी हर एक का डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, कुछ मासिस में ज़्यादा क्वांटिटेटिव जा रहा होता है, जी। तो दैट इज मिक्स एंड मैच जी। और सर जो बस सॉरी लास्ट क्वेश्चन था कि आप बता दें जो प्लांट्स हैं आपके 5 जिक्र किया है आपने, जी उनमें से भी एक्टिव कौन से हैं और वो कितनी कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं? इस वक्त एक्टिव 2 हैं, 500 टन का फ्लोट ग्लास का चल रहा है और अराउंड 200 टन मेट्रिक टन का टेबल वेयर का चल रहा है। 200 मेट्रिक टन का फ्लोट का टेबल वेयर का चल रहा है। जी, जो शुरका वीडियो लिंक पे हैं, अगर वो कोई क्वेश्चंस करना चाहे वो प्लीज वन बाय वन क्वेश्चंस अपने में प्लेस कर दें प्लीज। तो शाही साहब जी अगर कोई सलाकुम रिटन सर। फॉर्म अगर अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन आ रहे हैं तो वालेकुम सलाम जी सर जी प्लीज। जी सोहेल साहब प्लीज। जी ये आवाज आ रही है आपको? ये आ रही है। जी मैंने आपसे ये पूछना है कि जो लास्ट ईयर आपने जो पैक प्रोडक्शन जो आपने बताया था 1,95,000 मेट्रिक टन जो आपने किए थे, उसमें से आप ब्रेकअप बता सकते हैं कि फ्लोट कितना था और टेबल वेयर कितना था? इसमें से अराउंड 65% फ्लोट है जी और 35% टेबल वेयर। जी सलाकुम जब सर, आप आपके जो दो फर्नेसेस बंद है, एक फ्लोट अप्रैल 22 से बंद है और टेबल वेयर इज क्लोज सिंस नवंबर 22। जी आई जी थिंक द फ्लोट इज क्लोज बिकॉज ऑफ द स्लो डिमांड। तो उनके रीस्टार्ट्स के कोई प्लान अपडेट आप हमें बता सके? फ्लोट का बिल्कुल 100% रेडी है और अब सिर्फ मार्केट की कंडीशंस देख रहे हैं, जैसे ही वो इम्प्रूव होंगे इंशाल्लाह दैट वुड बी पुट इन प्रोडक्शन। और टेबल वेयर? टेबल वेयर इज अंडर उसकी है जी, उसकी रेनोवेशन रेनोवेट हो रहा है एंड होपफुली विद इन 3-4 मंथ्स टाइम वो तैयार हो जाएगा। और सर, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हुए, मेनली फ्लोट में कम हुए। इज दैट बिकॉज ऑफ आवर प्लांट बीइंग शट? कम प्रोडक्शन थी उसकी वजह से डिमांड कम थी? और आगे की आउटलुक की जरा बता दें। नहीं, डिमांड बिल्कुल कोई कम नहीं थी एक्सपोर्ट में, क्योंकि 2 प्लांट्स बंद थे, इसलिए लोकल मार्केट को पहले फीड करना हमने जरूरी समझा जी। अपना कौमी फ्रीजर समझ के लोकल मार्केट में पहले फीड हो ताकि इंपोर्ट ना करना पड़े किसी को, फॉरेन एक्सचेंज ज़ाया ना हो। जो बाकी बच गया वो फिर हमने एक्सपोर्ट किया, वरना नहीं किया बावजूद ऑर्डर्स होने के। तो इंशाल्लाह जैसे ही टेबल वेयर की दूसरी फर्नेस चलेगी तो एक्सपोर्ट को आप सब्सटेंशियल ग्रोथ देखेंगे जी। अच्छा जी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी बात साहब। ये सर एक बात बताइएगा, आपकी इन्वेंट्री जो है पिछले साल भी 4 बिलियन पे थी और ये अभी भी 4 बिलियन है। तो
ये इस साल में इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक टर्म ये कहता है, ये नंबर्स में देखें वॉल्यूमेट्रिक, तो इसका मतलब है जो पिछले साल इन्वेंट्री थी अभी उसकी आधी इन्वेंट्री आपके पास है। ये वॉल्यूमेट्रिकली कम हुई है, लेकिन इन्फ्लेशनरी प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, इसलिए उसमें आपको कॉस्ट उसमें ज्यादा नजर आ रही है जी, हाँ, वैल्यू उसमें वाइज। दोनों, इसीलिए मतलब ये अगर वॉल्यूम में देखें तो ये हाफ होगी तकरीबन, ये पिछले साल के बिल्कुल कम मुकाबले। होगी, उससे भी कम होगी जी। अरे सर, आपने बोला लेवरेज बहुत देना पड़ रहा है, तो ये डिस्काउंट्स भी देने पड़ रहे हैं और वो कहता है आपको क्रेडिट भी बहुत देना पड़ रहा है डिमांड कम होने की वजह से। जी, जिस पीरियड की हम बात करें इस पे अच्छा ठीक है। अच्छा सर, एक चीज बताइएगा, बीजीएल में जो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी सिग्निफिकेंट है? ये आपका रेवेन्यू वाइज या अर्निंग में उसका क्या क्या वेट हो जाएगा, और उसके लिए आगे प्लान क्या है आपका? जी, उसमें उसके 3 प्लांट्स हैं जी। टू स्टार्ट विद इंशाल्लाह जो हब चौकी में है जी, कराची में, उसको पहले स्टार्ट करेंगे जी। उसके बाद फिर वन बाय वन जो इधर पंजाब में है उनकी तरफ आएंगे जी। सबसे पहले अब में फार्मास्यूटिकल बॉटल्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि तारिक ग्लास राइट नाउ फार्मास्यूटिकल बिजनेस में नहीं है जी। तो अच्छा सर, ये अभी इंशाल्लाह उसकी फ्लोट, मार्केट, तो सर बोले सॉरी। फार्मास्यूटिकल्स की ग्रोथ भी है, मार्केट भी है, तो इंशाल्लाह देयर विल बी नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, ये फ्लोट में आगे डिमांड आप ये कहते हैं वापस आती देख रहे हैं या अभी और डिले लग रहा है आपको? सब ये तो अल्लाह ताला को पता है जी। जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह करे कल से बेहतरी आनी शुरू हो जाए तो कल ही हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं जी। ठीक है सर, ठीक है, मतलब डिमांड अभी लो है। ओके हाँ जी, सर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए तो जैसे ही आ जाती है सारा कुछ ऑनलाइन आ जाएगा जी। हेलो एनी सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन? हेलो। हेलो। जी, आवाज़ आ रही है जी आपको? जी जी, आ रही आ रही। मुझे पूछना था, जो आप लोग का बीजीएल का आप जरा प्लान। काइंडली प्लीज पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देते जाएं, फिर जी, क्वेश्चन आपकी कर बात लीजिए करूँ प्लीज। इनसाइड सिक्योरिटी से। मेरा सवाल ये था कि जो बीजीएल वाला प्लांट है, क्या आप लोग उससे एक्सपोर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और जो फर्नेस बंद पड़ा है वो कब तक जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा? बीजीएल की जी रेगुलेटरी अप्रूवल्स आर ऑलमोस्ट ऑल इन प्लेस। इंशाल्लाह बाय नवंबर उसका एग्रीमेंट प्रॉपर साइन हो जाएंगे जी। जो कुछ उसकी है मॉनेटरी टर्म्स में वो उसकी पेमेंट्स वगैरह हो जाएंगी। होपफुली इंशाल्लाह दिसंबर जनवरी के अंदर वो दैट विल बी पुट इन प्रोडक्शन जी। उसका सारा और सामान मंगवा के रख लिया हुआ है, जो भी रेनोवेशन का है, जो जो चीज़ें चाहिए, जो मशीनरी की ओवरहॉलिंग वगैरह है, वो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी में हो जाएगा जी। और एक्सपोर्ट्स के हवाले से वहाँ पे आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या, उस पर प्लांट सब एक्सपोर्ट्स के लिए? बिल्कुल एक्सपोर्ट का है जी। एक्सपोर्ट फिजिबल पड़ेगा वहाँ पे। थैंक यू। Assalamu alaikum. Can you hear me? जी बिल्कुल हारून साहब। This is Harun from Maple Leaf Capital. I had a question, just a short question regarding the recent gas price hike. As we know that the government is in process of hiking the gas price, do you think the whole sector will raise their prices? And थोड़ा सा अगर हम आपको आप हमें pricing mechanism आप लोगों का कैसे होता है उस पर थोड़ा सा brief कर सकें, क्योंकि साउथ में हमें नजर आ रहा है गैस प्राइसेस काफी बढ़ने वाली हैं, तो क्या उससे एज अ सेक्टर होल की कीमतें बढ़ेंगी, पास थ्रू होंगी, कि यू विल कंटिन्यू टू रिमेन एट करंट लेवल्स? ये गैस प्राइसेस का तारिक ग्लास पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी डॉलर के साथ। सॉरी सर, आपकी आवाज कट गई है, आई कैन नॉट हियर यू। हेलो हेलो। जी जी सर, अब आवाज आ रही है। मैं गुजारिश कर रहा था कि तारिक ग्लास को इंशाल्लाह कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी RLNG ले इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी प्राइसेस आर पैक्ड विद डॉलर्स जी। ओके, तो सर एज अ और सेक्टर, क्योंकि आपकी कुछ प्लेयर्स तो कराची वगैरह साउथ में हैं, उनकी तो प्राइस बढ़ी है। उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी। जो हतार में है KP के अंदर जिनके प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी। तो इंशाल्लाह आपकी।
Sir, can't hear you. हेलो सर अब आवाज आ रही है, बीच में रुक गई थी। वो जब आप कह रहे थे तार में कीमतें बढ़ेंगी, उसके बाद सर समझ वी लॉस्ट यू। में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साउथ में पड़ेगा और केपीके के अंदर प्राइसेस इंक्रीज होंगी गैस। तो सर सेक्टर एज अ होल अपनी कीमतें पास थ्रू करेगा कि नहीं, कि ये हर बंदा इंडिविजुअली प्राइसिंग मैकेनिज्म पे चलता है? ऐसा कोई कार्टेल नहीं है जी, कार्टेल कर भी नहीं सकते, अपनी अपनी मर्जी है हर एक की जी। ओके ओके, थैंक यू सर। ये डायरेक्ट देख के उसके हिसाब से चल रहे होते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। टांग सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि जिस तरह आप बता रहे थे कि फ्लोट ग्लास का जो अभी प्लांट आप मार्केट कंडीशन देख के आप ओपन करेंगे, तो सर लेकिन इस सूरत में थर्ड आपका जो फ्लोट ग्लास का प्लांट आ रहा है उसकी क्या जरूरत है? अभी तो सेकंड भी यूटिलाइज नहीं हो रहा प्रॉपर। थर्ड जो लकी कोर के साथ आ रहा है जी, जॉइंट वेंचर, उसकी बात कर रहे हैं जी जी, थर्ड फ्लोट जो एलसीआई के साथ आपका आना है, तो उसकी आपको जरूरत पेश आई क्योंकि अभी तो मार्केट कंडीशन ऐसी भी नहीं है जो सेकंड को भी सपोर्ट कर सके। जी। उसको ऑन होल्ड रखा हुआ है, जैसे ही मार्केट कंडीशंस इंप्रूव होंगी इंशाल्लाह उस पर काम शुरू होगा जी। ठीक है। और सर एक और चीज बता दें, FY22 में जो 3 लाख टन आपने जो प्रोडक्शन की थी उसमें फ्लोट कितना आपने प्रोड्यूस किया था 22 में? वही मैंने इससे बताया कि अराउंड 65% फ्लोट होता है जो बाकी। दोनों साल 22-23 में 65% ही था। जी जी, थैंक यू। वेलकम। एनी अदर Assalamu क्वेश्चन जी? alaikum. जी बात Assalamu alaikum, हाँ sir. हाँ Sir, हाँ। Akil from NBB Funds. Sir, sir, as you mentioned that there's two sources of fuel, FO and RNG. Sir, so my question is regarding that as per the new draft of policy of fuel policy, North Player would also get blended gas of rate at the rate of 20 and 80%. तो सर 20 इससे तकरीबन जी। 2080, तो सर इससे कुछ 3420 की MMBTU की प्राइस हो जाएगी, कोई 3700 3800 पर MMBTU से। तो सर इससे फायदा तो आपको हो रहा है थोड़ा बहुत ना, देखा जाए तो। हमें फायदा नहीं होगा ना नुकसान होगा, बाकी के प्लेयर्स को लॉस होगा जी, उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी जी। लेकिन सर पावर एंड आपको जो प्राइसिंग होगी वो पहले 100% पे होती थी, अब 2080 पे होती है, तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा? हमें नेचुरल गैस मिल ही नहीं रही, हम RLNG के ऊपर सर पंजाब में, सर हमें प्राइसिंग नेचुरल गैस प्राइसिंग की बात नहीं करें। मिल There जी। will be only the benefit of maximum by the 200 to 300 rupees per MMBTU. यस सर, तो ये कोई यही मेजर ये इम्पैक्ट नहीं है, जहाँ पे आपको कॉस्ट पड़ रही होती है 3700 to 4000 पर MMBTU, तो उस पे जस्ट आपको जो बेनिफिट हो रहा होगा। सर आवाज नहीं आ रही। कैन यू हेयर मी? हाँ जी। हाँ सर, यस सर। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इससे पहले क्योंकि हम लोग RLNG पे थे, तो इस नई पॉलिसी के साथ हमारे जो प्राइस का जो बेनिफिट हमें मिलेगा वो दैट इज, और उसके लिए जो है प्राइस वो 1200 टू 2700 पे इंक्रीज आ रही है। तो हमारे लिए बीइंग द तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज इट्स गुड to actually compete in the market because we are but already paying RLNG price on our product. ओके सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन सर यही है कि सर बहुत सारे मीडिया सर्कल्स में और सोशल मीडिया में ये बात आ रही है कि बहुत सारी कंपनीज ने, चाहे ऑटो हो गई या कोई और बहुत सारी हो गई, अक्रॉस द बोर्ड वो डिवैल्यूएशन कम कम पाकिस्तानी करेंसी अप्रिशिएट होने की वजह से उन्होंने प्राइजेस कम किए। तो आप लोगों को भी क्या नाम आ रहा है कि आप लोग भी शायद ग्लास इंडस्ट्री कुछ कम करे, लेकिन बहरहाल गैस प्राइजेस उनकी बढ़ गई है। तो इस पे आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे कि ये मीडिया में और सोशल मीडिया में ज्यादा आ रहा है कि ग्लास सेक्टर वाले प्राइजेस कम नहीं कर रहे हैं? देखिए ग्लास इंडस्ट्रीज में मेन दो कॉस्ट हैं जी, एक पावर एंड फ्यूल की है, दूसरी सोडा ऐश की है। ना सोडा ऐश की प्राइस कम हुई और ना गैस की प्राइस कम हुई।
बेनिफिट कौन सा पास ऑन हो सकता है, आप बताइए। ओके ओके, सही सही है, फेयर इनफ। सलामकुम एहसन सुरानी। मेरे से एक छोटा सा सवाल है कि आपने अपने ये फ्यूचर आउटलुक में न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में लिखा है कि आप लोग जो है वो सेरेमिक डिनर सेट्स एंड सेरेमिक टी मग्स और कटलरी आइटम्स में आप लोग का प्लान है कि एक्सपैंड। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बिकॉज बहुत बड़ा मार्केट। तो आप थोड़ा सा मार्केट का डायनामिक्स बता सकते हैं कि मार्केट का साइज क्या होगा एंड अभी कोई लोकल प्लेयर्स ऑलरेडी ये मैन्युफैक्चरिंग में है या पूरा इंपोर्टेड होता है एंड आपकी टाइमलाइंस क्या है कि आप कब विल यू बी रेडी टू ब्रिंग द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। देखिए राइट नाउ हमने कोई इसका प्लांट नहीं लगाया, हम सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग करवा के और मार्केट को स्टडी करते जा रहे हैं साथ साथ कि कौन सी प्रोडक्ट किस मार्केट एरिया के अंदर कितनी अच्छी बिक रही है और क्या प्राइसेस मिल रही हैं। वंस दैट इज मतलब पूरा फाइनलाइज हो जाता है फिर अपने प्लांट की तरफ जाएंगे। फिलहाल हमने 3-4 प्लांट्स के साथ टोल मैन्युफैक्चरिंग के एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, उनसे हम अपने हिसाब से चीज़ें बनवा के और मार्केट में आगे डिलीवर कर रहे हैं। मार्केट का साइज क्या होगा सर, कोई आप आइडिया दे सकते हैं मतलब इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू के ये बहुत वैसे तो डेली यूज का आइटम में हम सब यूज कर ही रहे होते हैं तो ये एक मेजर आइटम। सारा इंपोर्ट हो रहा है, जितना भी है बेतहाशा इंपोर्ट हो रहा है। फिलहाल तो मार्केट को वो चीज़ें सेस करने के लिए ही ये हमने स्टेप लिए। नहीं बट जैसे ऐसे आप आइडिया जैसे 5 अरब की मार्केट है 10 अरब की मार्केट है कितना इस तरीके से वैल्यू टर्म्स में अगर आप थोड़ा गाइड कर सकें इफ पॉसिबल। तो रफली आया है जी कि 200 कंटेनर्स एवरी मंथ पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो रहे हैं लोकल सेरेमिक मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड। अलावा। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मुबाशर फ्रॉम यूबिल फंड्स। जी बात। सर आपने बीच में जी आपने मेंशन किया था बीच में कुछ प्लेयर्स हैं जो कि ऑब्वियसली इंडिजिनस गैस यूज कर रहे थे जिनकी प्राइसेस ऑब्वियसली बढ़ी हैं। आपने केपी के हतर का जिक्र किया था, तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि फ्लोट में और टेबल वे में उनका मार्केट शेयर कितना है उन प्लेयर्स का जो कि इंडिजिनस गैस यूज कर रहे हैं, और आपको ऑब्वियसली अपनी मार्केट शेयर एक्रीशन लग रही है गोइंग फॉरवर्ड, उस पर थोड़ा सा कमेंट कर सकते हैं दोनों सेगमेंट्स में कि करंटली जो इंडिजिनस गैस यूज कर रहे थे उन प्लेयर्स का ऑब्वियसली मार्केट शेयर As कितना far है। as Rotas और is concerned, in Pakistan there are two units. One is Tariq गनी Gas. एंड Both have equal production capacities. मेरे सर फ्लोट एक और में, सवाल है सर सर मेरे फ्लोट में फ्लोट के अलावा सॉरी टेबल वे में, प्लॉट में तो ये बस दो ही हैं। नहीं टेबल वे में सर, टेबल वे में टेबल पे में गनी ग्लास भी है, बलोचिस्तान ग्लास भी था जो कि बंद पड़ा है, शफक है, गंज ग्लास है, मेट्रो है, सफायर है और एक नया प्रोजेक्ट भी आ रहा है दिल्ली ग्लास सर के नाम से। जो प्लेयर्स इंडिजिनस गैस यूज कर रहे थे उनका तकरीबन मार्केट शेयर कितना होगा? हार्डली 5-10%। ओके, सो सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है ही नहीं उनका। अली अहमद साहब। एनी अदर क्वेश्चन जी? जी अस्सलाम वालेकुम, साजिद बात जी कर रहा हूँ। जनाब। सर मेरे कुछ क्वेश्चन है सर। पहले तो आप मुझे बेनिफिट्स बता देंगे जो आपने क्या कहते हैं अभी बीजीएल का एक्वायर कर रहे हैं, उसके सिनर्जी बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? मेन एडवांटेज है जी फार्मास्यूटिकल बॉटल्स का, क्योंकि उनके पास फार्मास्यूटिकल बॉटल्स के लिए अप्रूवल्स चाहिए जो सी फार्मेसी से, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती हैं उनके पास। दे आर होल्डिंग दी अप्रूवल्स। तो
straight way we can go into manufacturing and selling. सही। That because उनके पास प्रॉपर मशीन्स भी हैं उस चीज के लिए, बाकी की चीजें भी हैं। सही। सर अभी रिसेंटली मैंने नोटिफिकेशन देखा था, आप लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि भाई बलूचिस्तान की जो बलूचिस्तान से आप प्रोडक्शन करेंगे बलूचिस्तान ग्लास को यूज करते हुए, तो वो कॉस्ट होगी उसकी कम होगी, तो आप बता सकते हैं किस तरह कम होगी? क्योंकि देखिए पंजाब हो या बलूचिस्तान हो, ओवरऑल तो कॉस्ट तो वही आ रही होती है। एक्चुअली जब वर्किंग चल रही थी तो वहां पे साउथ में आपको पता है कि गैस की प्राइसेस ऑलरेडी जो है 1100 टू 1200 पर MMBTU थी। तो वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली ड्रॉप कर रही थी। लेकिन अगर आज के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो जो गवर्नमेंट की या वो वहां भी प्लेयर्स होंगे उन सब पे एप्लीकेबल होगी। इट्स मींस कि जो भी फार्मास्यूटिकल मार्केट के अंदर कंपटीशन होगा उन सबको गैस प्राइस एक ही मिल रही होगी। सो हमारे लिए वाइबल होगा कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, एक न्यू फील्ड के अंदर एंट्री तारिक क्लास के लिए इजी हो जाएगी। फार्मास्यूटिकल में जी फार्मास्यूटिकल में। सर वैसे जैसे गनी ग्लास है तो उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, जैसे जीएसके, कोका कोला। तो अभी आपने जैसे एक्सप्लेन करा कि बलूचिस्तान ग्लास को एक्वायर करके फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो मतलब ये चीज मतलब पहले क्यों नहीं, या फिर तारिक ग्लास एज अ एंटिटी मतलब क्यों, या कर रहे करेगी आगे इन फ्यूचर वो इस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, या सिर्फ ओपन मार्केट में सेलिंग करेगी? तो आपका क्लियर नहीं है जी, काइंडली रिपीट करेंगे। जी सर बिल्कुल। मैंने भी कहा कि गनी ग्लास जैसे लॉन्ग टर्म मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, जैसे जीएसके, कोका कोला। तो तारिक ग्लास इटसेल्फ मतलब बलूचिस्तान ग्लास को एक्वायर करने के बाद तो मतलब जिनके अप्रूवल्स हुए हैं उनके साथ मतलब उनके लिए तो बनाएंगे प्रोडक्ट्स, तो फर्दर वो इस तरह लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सोच रही है या नहीं? देखिए मल्टीनेशनल्स कभी एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स कभी किसी के साथ नहीं करती। दे ऑलवेज प्रेफर टू हैव मोर देन 2 प्लेयर्स। तो कोक से और पेप्सी से जिस तरह आप कह रहे हैं ये आपकी गलत है अंडरस्टैंडिंग, कभी नहीं करते इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स। हम भी उनको लिमिटेड स्केल के ऊपर कोक और पेप्सी को सप्लाई कर रहे हैं बॉटल्स, यहाँ पे हम बना रहे हैं शेखपुरा के अंदर। अच्छा अच्छा सही। सर अभी रिसेंटली आपने एक बात कही अच्छा जो मैं तमाम शुरका से ज़रा करूँगा थोड़ा सा कंसाइज करें, क्योंकि काफ़ी लंबा ड्यूरेशन हो गया है, मोर देन जी 45 मिनट्स हो गए Q&A को। तो मेरे ख्याल में ये लास्ट क्वेश्चन आप प्लीज़ कर लें, जी लास्ट तो क्वेश्चन। फिर इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इंशाल्लाह। श्योर सर। प्लीज़ लास्ट क्वेश्चन प्लीज़। सर अभी सर ने एक्सप्लेन करा कि उनकी जो कॉस्ट है मतलब वो डॉलर के साथ चल रही है, तो मतलब वो इसलिए उनके इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर अगर कॉस्ट वगैरह महंगी पड़ती है तो। लेकिन सर अभी देखा गया है कि पाकिस्तान की रुपी जो है अप्रिशिएट हुई है, लेकिन अब आने वाले वक्त में वो वापस देखें इंटरनेशनल लेवल पे तो डॉलर महंगा हो रहा है, लेकिन इन पाकिस्तान अभी भी अप्रिशिएट ही कर रहा है वो। लेकिन अब आने वाले वक्त में तो वो पाकिस्तान रुपी भी डेप्रिशिएट कर ही जाएगा, तो उसके लिए आपने क्या सोचा हुआ है फिर? कॉस्ट तो फिर आपकी भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ेगी, मगर जो चीज़ें प्राइसेस बढ़ेंगी नेचुरली कॉस्ट बढ़ेगी। कुछ कंपनी जैसा पहले ऑब्जॉर्व किया आप इस साल के अंदर, और फिर आप पास ऑन कर रहे हैं, मिक्स एंड मैच करके चल रहा होता है जी। तो सर उसके लिए कोई हालात ही स्ट्रेटेजिक जिस प्लान तरह के हैं बनाया उस हुआ है हिसाब आपने? से चलना है ना जी। बिल्कुल है जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया जी।